Medically Speaking, under the aegis of ITV Network, presented the Sushruta Awards at Bharat Mandapam in New Delhi. Union Minister for Health and Family Welfare Mansukh Mandavia graced the event as the chief guest. Union Minister Mandavia facilitated 53 Sushruta Awards. These included health officials, ASHA workers and NGO volunteers, PMJAY beneficiaries, doctors and nurses who work at the grassroots, medics as well as organ donors. The concept of the Sushruta Awards found praise among the medical community and healthcare workers. The awards have been named after Sushruta, the father of Indian surgery, who authored the Sushruta Samhita. The Samhita is one of the most ancient Sanskrit texts on medicine and surgery. This is the first time a televised conclave in India has shown stories of people whose lives have been transformed via public healthcare schemes and the efforts of those who work at the grassroots to propel India's health revolution. Let's in fact take a look at some of these stories. Arunoday Gupta is a resident of Adarsh Nagar, Delhi, and he has been running a Jan Aushadhi Kendra for the last 3.5 years. He opened his store in 2020 at the peak of COVID to help tide over the shortage of medical supplies. कोरोना के टाइम में लॉकडाउन था, लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अफेक्टेड थे और हेल्थ के लिए भी बहुत वरीड थे। तो उस समय में ऐसी एक योजना को लाना बहुत ज़रूरी मुझे लगा और मैंने जो नौजी डिपार्टमेंट है, मैंने वीडियोकॉन टावर में मैंने वहाँ संपर्क किया और उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया कि किस प्रकार से मैं स्टोर को खोल सकता हूँ। जहाँ तक लोगों की भावनाओं की बात है, मैं अगर लोगों के एक्सपीरियंस में शेयर करूँ तो वो बहुत बार तो भावुक हो जाते हैं लोग कि इतनी कम प्राइसेस पे मेडिसिन उनको मिल पाती हैं और उनके जो डेली उनका जो खर्चा होता है या मंथली बजट के अंदर एक बहुत बड़ी राहत इस योजना के माध्यम से लोगों को मिलती है। 5,000 के करीब दवाइयाँ लेता था, अब मेरे को 1,500-1,600 रुपये के पे दवाइयाँ हो जाता महीने की। ये और लोगों को पता चलना चाहिए है तो और कोई भी यूज करे इसको, अपना तो वो ट्राई करे कि भाई कैसा क्या हो रहा है। हमें तो अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैंने टीवी में देखा कि जन औषधि की स्कीम एक गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। फिर हमारे मन में एक शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डुप्लीकेसी हो या कुछ ऐसा हो। तो बिल के बारे में पूछा, बोले हाँ पक्का बिल भी देंगे, स्टैंप लगा के देंगे। दूसरी बात, गवर्नमेंट की मुहर लगी हुई थी जिस पे कोई डाउट ही नहीं किया जा सकता है। तो मैंने फिर उसी दिन से यहाँ से लेना शुरू कर दिया। NewsX and India News applaud Arunoday Gupta's efforts. Medically Speaking confers upon him the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health. नमस्ते, मेरा नाम चेतना अर्शभाई संघानी। आपका जीवन किसी के काम में आ सके, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कहते हैं ने, जीवन भले ही लंबा न हो, यदि आपका जीवन किसी के काम में आ सके तो आपका जीवन सार्थक हो सकता है। Chetna lost her son 4 days after he was born. As soon as he was born, he had to be put on a ventilator in the ICU. After his death, Chetna decided to donate her child's organs. मैंने सोचा मैं तो अपने संतान को खो चुकी हूँ, क्योंकि न इसके अंगदान करने में किसी और के बच्चों को जीवन रक्षा करूँ। मुझे बताते हुए गर्व है कि मेरे छोटे से नवजात बच्चे ने 6 बच्चों के जीवन को रोशन कर दिया। मैं मानती हूँ वो छोटी सी उम्र में हीरो जैसा काम कर गया। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ नोटो और सोटो गुजरात को, जिन्होंने इस पुण्य कार्य में मेरी सहायता की। NewsX and India News laud Chetna Harsanghani for this noble cause. Medically Speaking confers upon her the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health. Dr. Achut Baisha is Principal cum Chief Superintendent at the Guwahati Medical College and Hospital in Guwahati. He has been closely associated with the implementation of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana in Guwahati. Ayushman Bharat is one of the biggest health scheme of the world, and it was being launched
in the same time we have worked in India at Guwahati Medical College also during 2018 September. Since the inception till the January 2024, we could serve more than 40,000 cases at Guwahati Medical College with these packages of the PMJY. And in the meantime, the college also earned more than 57 crore during this period only from the PMJY. And we have got a dedicated counter for the PMJY, dedicated lounge for the PMJY beneficiaries. We are also providing around 12 extra manpower so that we can serve all the people with any difficulties coming for the treatment at GMCH under the PMJY. At this moment, we are having almost 40% of the beneficiaries at Guwahati Medical College admitted are beneficiaries of the PMJY. NewsX and India News applaud Dr. Achyut Vaishya's efforts. Medically speaking, confers upon him the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health. फाउंडेशन को अंगदान के क्षेत्र में काम करते हुए 24 साल हो गए हैं। 1997 में जब हमने यह अभियान चालू किया तो लोगों का यह मानना था कि इस तरह का अंगदान भारत में नहीं हो सकता। यहाँ तक बड़े हॉस्पिटलों में बड़े डॉक्टर भी यही सोचते थे। Dr. Sunil Shroff returned from UK in the 90s to take on the difficult task of promoting organ donation and give hope to organ failure patients. मोहन फाउंडेशन ने इस सोच को बदला, एक नया रास्ता दिखलाया और अंगदान कैसे संभव है इसका एक यूनिक मॉडल तैयार किया जिसे आप इंडियन मॉडल कह सकते हैं। सही मरीज को ढूंढकर कम समय में उन्हें अंग पहुंचाना यह एक कठिन कार्य है। हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एक ऑनलाइन प्रोग्राम बताया जो सफलतापूर्वक यह जानकारी हमें दे देता है। Mohan Foundation has also created a support group on how to take care of the families of organ donors and the patients suffering from organ failure. मैं सोचता हूं कि अगर हम मिलजुल कर यह काम करें तो हम इस अभियान को एक बहुत बड़ा मुकाम दे सकते हैं। जैसे कि मदर टेरेसा ने कहा, जो काम मैं कर सकती हूं वह काम आप नहीं कर सकते और जो काम आप कर सकते हैं वह काम मैं नहीं कर सकती, पर हम मिलजुल कर एक महान काम कर सकते हैं। NewsX and India News applaud Dr. Sunil Shroff and Mohan Foundation for being a pioneer in organ donation. Medically speaking, confers upon Dr. Sunil Shroff the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health. This is Yamini working as a CHO at Vadakuritu Health and Wellness Center under Perambalur PSC of Krishna district, Andhra Pradesh. We are there to deliver 12 types of health packages to the rural health. We are implementing this this rural health under the mobile medical unit with our family physician concept. We are feeling honored as becoming a part of the rural health and providing the services at the root level. NewsX and India News applaud Community Health Officer M. Yamini for her commendable work. Medically speaking, confers upon her the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health. While serving the country as a doctor, Dr. Swapna Verma came across the challenges of the public. In order to support them, she decided to set up Madhurima Seva Sanskar Foundation with an aim to better the lives of the people and change the society into a healthy and a strong nation. Dr. Verma is running Clinic on Wheels, a CSR initiative of the IMS Foundation. इस प्रोजेक्ट का नाम हील रूरल इंडिया है। इसके अंदर 5 बिंदुओं को फोकस किया गया है: हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ स्क्रीनिंग, से नो टू एडिक्शन, ट्रीटमेंट, स्किल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लिनिक ऑन व्हील्स के अंतर्गत हम मधुमेह एवं रक्तचाप जैसी बीमारियों को फोकस कर रहे हैं। तो ना ही उसका सिर्फ इलाज एवं उसका पूर्णता रूप से उसकी जानकारियां और उसकी लाइफस्टाइल एडाप्टेशन के बारे में भी हम गाँव वासियों को एजुकेट करेंगे। मधुरिमा सेवा संस्कार फाउंडेशन डॉक्टर स्वप्ना वर्मा समाज सेवी सतना के द्वारा हमारे ग्राम पंचायत पालदेव में कैंप लगाया गया, जिसमें उन्होंने हर प्रकार के मर्ज की दवा वितरण की गई।
सपना वर्मा द्वारा डॉक्टर द्वारा कैंप लगाया गया जो कि गरीबों को निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयाँ, बीपी, शुगर, कई मरीजों की दवाइयाँ फ्री में। NewsX and India News laud Dr. Swapna Verma's efforts. Medically speaking, confers upon her the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health. नमस्कार, मैं मयूरी रवि पवार। मैं एक आशा कार्यकर्ती हूँ। मैं 4 सालों से ये काम कर रही हूँ। मेरी माँ भी एक आशा कार्यकर्ती है। मैंने उनको काम करते हुए देखा है। उनकी समाज में बहुत इज्जत है। उनको बहुत मान सम्मान मिलता है। मैं उससे बहुत प्रेरित हूँ। उनकी वजह से मैं इस काम से जुड़ी हुई हूँ। मुझे मेरे काम से बहुत मान सम्मान मिला है और मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। मेरा काम मेरे लिए एक अखंड ऊर्जा स्रोत है। NewsX and India News applaud Asha worker Mayuri Ravi Pawar for her commendable work. Medically speaking, confers upon her the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health. Milan Shah owns and runs 5 Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi stores in Ahmedabad. He caters to more than 2,500 beneficiaries under the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. मैं लास्ट 60 सालों से प्रधानमंत्री जन औषधि में जुड़ा हुआ हूँ। NABL टेस्टिंग की हुई दवाइयाँ होती है, यानी गुड क्वालिटी विद अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे दवाइयाँ मिलती है। Milan also manages 3 Jan Aushadhi stores of the Ahmedabad Municipal Corporation. He runs 73 more government-owned Jan Aushadhi stores across the state. Milan has been conducting health checkup camps at public places like public parks and old age homes. An uptick in the number of customers visiting his store encouraged him to open more branches. ये दवा हमको 350 में मिल रही है बाहर, या हमको 140 मिलती है। હું અહીંયાથી સેનિટરી પેડ લઉં છું નિયમિત, 1 રૂપિયામાં એક આપે છે। हमको यहाँ पे जो 500 की दवा बाहर मिलती है, यहाँ पे 200 की मिलती है। डायबिटीज, बीपी ये लोग भी फ्री में चेक करके देते हैं। NewsX and India News laud Milan Shah for his efforts. Medically speaking, confers upon him the Sushruta Award in the service of Bharat in the field of health. Pinky Patel is a community health officer in Hajipur village in Kutch district of Gujarat. She belongs to Mehsana. She has been working as a community health officer for the last 4 years. मैंने इन 4 सालों में कई कुदरती परिस्थितियों का सामना किया है, जैसे कि कोविड है, बिपरजॉय है, और इनमें हमने अच्छी तरीके से सफलता भी पाई है। Pinky has to walk long distances to provide vaccination and other medical assistance to the villagers. The entire area is a desert and there is no transportation available. Poor network connectivity makes her job challenging. This, however, has not deterred Pinky from performing her duty. हम घर घर जाके वैक्सीनेशंस, आबा है, NCD है, सब लोगों को हम वहीं पर पैदल चलकर ही हम अपनी सुविधाएं देते हैं। मैंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना करके मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। इसलिए मैं मानती हूँ कि राष्ट्र ही सेवा परमो धर्म है। NewsX and India News applaud Community Health Officer Pinky Patel for her commendable work. Medically speaking, confers upon her the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health. मैं आशा कार्यकर्ती सरिता नोटियाल, डांडा कुदाने वाला किरसाली सेंटर देहरादून। मुझे एनम और आंगनवाड़ी के द्वारा आशा के रूप में रखा गया था और मुझे आशा का काम करते हुए 18 साल पूरे हो चुके हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इस क्षेत्र में और मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से। NewsX and India News applaud Asha worker Sarita Nautiyal for her commendable work. Medically speaking, confers upon her the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health.
Ranchhod Das Ji Bapu Charitable Hospital is located in Rajkot in Gujarat and is run by Sri Sadguru Southern Trust. Inspired by Sri Ranchhod Das Ji Bapu, the trust was established in 1961. The hospital provides free eye checkup, high-quality surgery for cataract, glaucoma, squint, corneal disorders and retina service, all free of cost. મારું નામ ગૌરીબેન ઘનશ્યામભાઈ. અહીંયા અમે રણછોડદાસ બાપુના આશ્રમમાં આવ્યા છીએ અને અહીંયા અમને સગવડતા બધી સારી મળે છે. ખાવા પીવાની, બેસવા ઉઠવાની બધી વ્યવસ્થા સારી મળી છે. તો અમે સારું ઓપરેશન કરીને અમે ઘરે જઈએ છીએ. મારું નામ નટવરલાલ ઠાકરજીભાઈ. હું સાવરકુંડલાથી આવું છું. મારે રહેવા જમવાનું પણ કોઈ જાતનો સાડે ચોર નથી. દવા ને બધું વિનામૂલ્યે આપેલું છે. We provide them free of cost all medicine, dark glass, blanket and styling facility all the patient. We provide morning breakfast, lunch, high tea and dinner free of cost to the patient. NewsX and India News applaud all the good work being done by Ranchhod Das Ji Bapu Charitable Hospital. Medically speaking confers upon Praveen Vasani, the Managing Trustee of Ranchhod Das Ji Bapu Charitable Hospital, the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health. Sadguru Sri Madhusudan is a young humanitarian and a visionary who works in the sector of healthcare to serve the sick and needy. Sri Madhusudan operates a chain of 5 single-specialty heart care hospitals in India. It is the largest chain of pediatric cardiac hospitals without billing counters. There are over 28,000 pediatric heart surgeries and catheter interventions that have been done since the inception of these hospitals. These hospitals are located in Chhattisgarh, Haryana, Maharashtra, Telangana and Karnataka. There are 2 other such hospitals in Fiji and Sri Lanka. There are 5 specialized Sri Satya Sai Sanjeevani Mother and Child Hospitals, Sai Swasth Primary Care Wellness Centers and Sri Satya Sai Arogya Vahini Mobile Hospital Services for rural India. They also serve the sick and the needy. India's first free private rural medical college, Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research, was inaugurated in March 2023 by Prime Minister Narendra Modi. Sri Satya Sai Sarla Memorial Hospital is a completely free of cost multi-specialty hospital that is also a teaching hospital for India's first free medical college in Karnataka. NewsX and India News laud Sadguru Sri Madhusudan's efforts. Medically speaking, confers upon him the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health. Urvashi Nirav Patel is a corporator from Surat. She has been working for the welfare of the people in the field of health in her ward. Under Prime Minister Jan Aushadhi Pariyojana, she has championed the cause of women's menstrual health. She and her team have been able to achieve the milestone of distributing 1,65,000 sanitary pads to girls and women in Surat. ट्रस्ट के साथ सिस्टम ने भी हमें बहुत मदद की है कि चाहे स्कूल में कार्यक्रम करने हैं या आरोग्य केंद्र में करना है तो सब लोगों ने मिलकर इसको बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ाया. Urvashi Nirav Patel has worked tirelessly to eradicate tuberculosis from her ward. ઉર્વશી બેન તરફથી અમને જે આ કીટ મળી છે તે ખૂબ જ પોષણયુક્ત આહાર હોય છે અને અમારા ટીબી મુક્ત બનાવવા માટે એમણે જે Under Nikshay Poshan Yojana of the Ministry of Health and Family Welfare, she and her team have been providing nutritional support to TB patients by way of distributing them food baskets. ક્રોસ કર્યો છે પછી સારું બી થઈ ગયું છે એના પછી મને ટીબીના લક્ષણો હતા પછી મેં હેમંતભાઈના કોન્ટેક્ટમાં આવી હતી પછી રિપોર્ટ એવું બધું કરાવ્યું ગર્ભાની જાંચ કરાવી પછી એમાં પોઝિટિવ આવ્યું હતું जांच कराई पॉजिटिव आयु પછી 6 મહિનાની દવા ચાલુ કરવાની કીધી છે દવા ચાલુ કરતી હતી દર મહિને 500 રૂપિયા ખાતામાં આવતા હતા. NewsX and India News applaud Urvashi Nirav Patel's efforts. Medically speaking, confers upon her the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health.
वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिला में विकासखंड पंडरिया के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर भाकुर में पदस्थ हूँ। 2022 में एनएचएम से निकली भर्ती से मेरी नियुक्ति हुई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर भाकुर वनांचल क्षेत्र में स्थित है, जहां बैगा आदिवासी निवासरत हैं। उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबंधित सेवाएं देना, उनसे जुड़ना, इससे मुझे आत्मसंतुष्टि होती है। NewsX and India News applaud Community Health Officer Vanita Pisda for her commendable work. Medically speaking, confers upon her the Sushruta Award in service of Bharat in the field of health. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.